हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है मेरा नाम तौफिक नाइक और मैं इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी 11th क्लास 12th क्लास के लिए आईआईटी जेईई मेंस और सीईटी के लिए आपको कराता हूँ. सो अब तक वी हैव स्टडीड अंटिल नाउ मेनी टॉपिक्स इन फिजिक्स and many topics in chemistry. We will continue in this class chemistry part. Like we will study in this laws of conservation of chemical combinations. Like what we will study there? Laws of chemical combination. Okay, students. As the letter is saying, laws of chemical combination means you can get a knowledge about this topic. Like how? See this. ये देखिए, combination है. ये combination क्या होता है? Selection और more selection या फिर combine हो, जो भी थिंग्स कंबाइन होगा उसे हम कॉम्बिनेशन करेंगे. जैसे आपके अपने 10th के बाद फर्स्ट 11th लिया, 11th में आपने क्या कॉम्बिनेशन लिया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी. इस तरह कंबाइन होगा ना, उसे हम कॉम्बिनेशन करेंगे. लेकिन इस चीज में क्या कंबाइन हो रहा है? केमिकल कंबाइन हो रहा है. ओके, सो इसे आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं. देखिए, इट इज द combination of chemical in a proper way. यह हो गया आपको समझने के लिए definition. This definition is for your understanding, but the standard definition is it's like it is the combination or arrangement of the element in an compound is called chemical combination. Okay, students, is called chemical combination. And in this combination, we understand this combination more thoroughly by using 5 laws. What are those laws? Let us study. First law is, when you are studying about a chemical or combination, you will study, is there any mass in this chemical? Means we will study like law of conservation of mass. Okay, student. Similarly, you will study law of definite proportion. What is this definite proportion means? It's like, अगर आप कुछ इनपुट दे रहे हो, एक परसेंटेज लेवल में आप इनपुट दे रहे हो, तो आपका आंसर भी आपको परसेंटेज लेवल में आना है. जैसे कि आपने इधर तरफ लेफ्ट साइड में आप अगर 100% जा रहे हैं, तो अगर रिजल्ट्स में 2 कंपोनेंट आए तो वो 2 कंपोनेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. उस दोनों का परसेंटेज मिलाए तो भी हमें इक्वल टू प्रोडक्ट आना चाहिए, रिजल्ट रिएक्टेंट आना चाहिए. उस तरह हम डेफिनेट प्रोपोर्शन करेंगे, आगे सीखेंगे. एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल proportion. Okay, student. Similarly, fourth one is gay-lussac law, and fifth one is Avogadro's law or number. Okay, student. This law of definite proportion is also called as constant combination. Okay, students. So you can see these laws. These are the 5 laws which gives you brief information about distribution or the combination of compound or elements in a compound. Okay. So let us study this law and this law in this class. Okay. So let's carry on. We will study first law of conservation of mass. As the word is saying, it is a conservation of mass. Means, conservation means
you have studied in sociology, like conservation of forest, conservation of water. What does that mean? Conservation means storing, or you can say conservation means आप किस तरह बोल सकते हैं conservation को? आपने जितना भी प्रोडक्ट में दिया हो, जितना भी आपने रिएक्टेंट में दिया हो, उतना आपको 100% रिजल्ट आना चाहिए. जैसा कि आपने एग्जाम में 100% लिखा हो मार्क्स को, तो आपका रिजल्ट 20% आएगा ना. इस तरह के थिंग्स को हम कंजर्वेशन करेंगे. तो कंजर्वेशन ऑफ मास यानी क्या होता है? मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स जस्ट सिंपल, लुक, द मास ऑफ प्रोडक्ट is equal to the mass of reactants. Students, this is a very simple definition of law of conservation of mass. What is this defining? If you done an experiment like A plus B, you have done an experiment. This must be is equal to B plus A. और समथिंग में भी कंजर्वेशन, आपने जितना भी इनपुट दिया हो आपको उतना ही आउटपुट आना चाहिए. एक एग्जांपल के जरिए हम इसे जानते हैं. किस तरह? एग्जांपल लाइक यू कैन टेक मर्क्यूरिक ऑक्साइड. ओके, सो वी आर टेकिंग जस्ट वन थिंग, मर्क्यूरिक ऑक्साइड. सो इट इज हाउ मच परसेंटेज? इट इज 100%. We are taking mercuric oxide of 100%. What we get? So we are getting first one, mercury plus oxide. Sorry, mercury plus oxygen. How much amount? In what amount we are getting this? मर्क्यूरी इसमें 90.4 ग्राम होगा एंड ये 9.6 ग्राम. ओके स्टूडेंट्स, सिंपल. और एल्स इफ मर्क्यूरी इज 90.6 ग्राम, इट मस्ट बी 6.9.4 ग्राम. देखिए, अगर ये 100% है, आप इस दोनों को ऐड करें तो क्या होगा? आप इस दोनों को ऐड करें तो भी आपको कितना आएगा? 100 ग्राम आएगा ना. सिंपली ये 100 ग्राम है. अगर कंजर्वेशन होना चाहिए तो क्या होगा? हमें जो प्रोडक्ट में आएगा उसे हम सम करेंगे तो वो भी हमें 100 ग्राम होना चाहिए. इस तरह के दिन को हम कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं. चलिए अब इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, दे विल आस्क यू प्रॉब्लम्स लाइक, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको पूछ सकते हैं. सी, सो व्हाट दे आर प्रॉब्लम गिवन व्हेन ए 10 ग्राम ऑफ CaCO3 on heating gives 4.4 gram of CO2 and 5.6 gram of CaO. Show that their observation or agreement to law of conservation of mass. So first of all, when you are reading a problem, just see what are they are given and what they are trying to make you understand. So in this problem, they have given you like CaCO3. How much grams? 10 grams of CaCO3 and CO2 of how much grams? 4.4 grams. And CaO of how much gram? 5.6 grams. So what they are trying to say in this problem is when you heat this, it gives this CO2 plus CaO. And they are saying this has 10 grams and this is 4.4 grams and 5.6 grams. So you have to make sure that is this problem satisfy law of conservation of mass. If the law of conservation mass says that when a mass of product is equal to the mass of reactant, then it is conserved. So look, यहाँ पर 10 ग्राम्स है, यहाँ पर इसे दो को एडिशन करिए तो आपको कितना आएगा? 10 ग्राम्स. तो mass of reactant is equal to mass of product. So law of conservation of mass is satisfied. So let's see a second problem without wasting time. So your second problem will be like a mass of copper. Sorry. When 4.2 gram of NaHCO3 is added to a solution of CH2CO3 weighing 10 grams, it is observed that 2.2 of CO2 is released into atmosphere.
Okay. Second problem. In this question, second problem. The residue is formed to weight 12 grams. Show that the observation or agreement with the law of conservation of mass. Okay, students. Very easy problem. Just try to understand the problem. They are saying when NaHCO3 is added to CH3COOH. When NaHCO3 is added to CH3COOH, you get two types, residue and CO2. What you get? Residue and CO2. So what is the weight of this they have given? They have given like 4.2 gram of this, and this one is they have given 10 grams. 10 grams. So you get a residue. Residue of what? Residue of 12 grams and carbon of 2.2 grams. So when you add this to this, you will get a solution like CH3COONA plus H2O plus CO2. स्टूडेंट्स यहाँ पर आके आप एक ऑब्जर्व कीजिए, आपको ये दिया हुआ है, रेसिड्यू दिया हुआ है, CO2 दिए हुए। सो आपको ये दिया हुआ है, CO2 पता है, इन फार्मूला में आपको ये पता है, ये पता है, CO2 पता है। ये जो आपको पता नहीं है, इसी को हम कहते हैं रेसिड्यू। इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम रेसिड्यू कहेंगे। तो हमें यहां पर क्या फाइंड करना है? ये जो फार्मूला है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है। सो वेरी सिंपल, लाइक इसका कितना है 4.2 ग्राम्स एंड इसका कितना है 10 ग्राम्स। रेसिड्यू का कितना है 12 ग्राम्स एंड सिमिलरली CO2 का 2 ग्राम्स, तो 14.2 ग्राम्स एंड हियर 14.2 grams. Satisfies up. Reactant is equal to product. Students, very easy. And इसी तरह we will do another problem in this. In this problem only we will do another problem. Like. Okay. So your next problem will be like, they have given you like, if 6.3 gram of NaHCO3 is added to 15 gram of, if 6.3 gram of NaHCO3 is added to 15 gram of CH3COOH, it gives us a residue. It gives us a residue of 18 grams. It gives us a residue of 18 grams. Now calculate the value of CO2. Calculate the value of CO2. So just simple. आपको इनपुट, आपको रिएक्टेंट्स में ये दो फार्मूला दिया हुआ है। आपको रिएक्टेंट्स में इसकी वैल्यू दी हुई है एंड आपको प्रोडक्ट में जो आया है वो एक रेसिड्यू आया है, एंड CO2 आया है। हमें क्या पता है? हमें एक किस चीज पता है? ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सेटिस्फाई करती है। मींस रिएक्टेंट प्रोडक्ट मास इक्वल टू प्रोडक्ट मास। सो if this must be equal means there must be a value which we add to this, it will be equal to this. So we'll find that value. So it will be like 6.3 plus 15, 6.3 okay, grams is equal to 0.8 grams plus CO2. We have to find mass of this, like just simple, minus 10.8 is equal to CO2. What you will get the answer? You will get the answer like 3.3 grams is equal to CO2. So your mass of carbon dioxide is 3.36. Similarly, take this value and add here. You will get a something value which is equal to this value. Okay, very easily solve this problem. So now let us discuss the topic, law of definite proportion. What is this law of definite proportion? Law of definite proportion. Let's see this. Law of definite proportion. Okay, students. What does it mean? This is a name itself saying definite. There must be definitely proportions. It means that the pure chemical
compound consists of same, remember this point, same elements combined and same proportional of mass. What this definition is trying to say you? This definition is trying to say you that if you do a reaction, there must be elements which you have given. आपने जो एलिमेंट्स देंगे वही एलिमेंट्स आपको रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट में आएंगे. देयर विल बी नो एक्स्ट्रा एलिमेंट. सेम एलिमेंट्स आएंगे आपको हर एक रिएक्टेंट में. जो आप दिए होंगे वही एलिमेंट आपको प्रोडक्ट में या फिर रिएक्टेंट में आएंगे. विथ उसकी मास क्या होगी? मास भी सेम होगी, मास भी नहीं चेंज होगी. आपने जितना मास दिए होगे, जितना एलिमेंट दिए होगे, उतने ही एलिमेंट आपको रिएक्टेंट में आएंगे विदाउट चेंज इन मास. So, for example, let us calculate the production of CO2, manufacture of CO2. Like, you can make CO2 by, like, Coke and ये Coke नहीं, C, Coke plus oxygen. If you add Coke plus oxygen, it will give you like CO2, carbon dioxide. ओके. सिमिलरली लुक, इसमें ये एग्जांपल बात समझिए. सेम एलिमेंट्स CO2 सेम एलिमेंट्स एंड मास. अगर इसका मास एक 2 होगा, अगर इसका मास एक 3 होगा, तो इसका मास क्या होगा? 5 होगा. इस तरह आपको मास भी कंसिडर होना चाहिए एंड जो आप एलिमेंट्स दोगे वही एलिमेंट्स आपको प्रोडक्ट मानना चाहिए. इसी तरह आप अभी एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि CaCO3, इसे हम क्या कहेंगे? लाइमस्टोन. और कैल्शियम कार्बोनेट. Calcium carbonates gives you 2 types. What are those? One, CaO plus CO3. Okay, yeah. CaO, calcium oxide, and CO2. Carbon dioxide. Similarly, now observe in this also. The elements is same, like same elements. CaCO3, CaO, CO2. Similarly, there is no extra element in this. Okay, yeah. This kind of solutions, this kind of property we called as law of definite proportion. So there is 2-3 problems. We will discuss about this. Come. So what are those problems? Like the mass of copper oxide obtained by heating 2.16 grams of metallic copper with nitric acid and subsequently ignition was found to be 2.7 grams. Okay. In another experiment, 1.1 gram of copper oxide is reduced, yield 0.97 gram of copper. Show that the data illustrated the law of conservation of proportion. So, in this problem, try to understand what they have given. In this problem, first they have given weight of copper. Look, they have given weight of copper. Correct, students? They have given weight of copper. What is the weight of copper they have given? 2.16 grams. Similarly, they have given weight of copper oxide. What amount of weight of copper oxide they have given? 2.06 amount of copper oxide. So the mass of copper oxide is obtained by heating is 2.7 grams of metallic copper with nitric acid, and sequentially ignition was found to be 2.7. Okay, easy question. Okay, now we have to find is the percentage of these two, means the percentage of copper and the percentage of oxygen in this problem. So if you want to find the percentage, we first want to know the weight of copper and weight of oxygen. So how you find the weight of copper and weight of oxygen? Look, you will find the first weight of oxygen
It's very simple. Just see in this carbon oxide, in this carbon, if we subtract this by this, carbon cancel, you will get oxygen. Very easy. So it will be like 2.16 minus 2.70 is equal to what it will come? 0.5. What gives 0.54. Okay, students. This much weight of oxygen we have got. Now we have to find the percentage of copper and percentage of oxygen by very easy method. Just percentage of copper we will find first. Percentage of copper is what? Just simple. You can write it as the weight of copper divided by total, like weight of copper oxide into 100. This is like finding your percentage in your exam. Just like you have got mass of 80 to 100, 80 divided by 100. We have to find the percentage of this. How you will find your obtained mass divided by total marks into 100%. What you will get? This cancel 80%. Similarly, this kind of formula we have used this. Weight of copper and weight of total, in which we have to find copper oxide into 100. What we can write here? Weight of copper 2.16 divided by weight of carbon oxide 2 plus 2.70 into 100. What it will come? 80%. Okay, student. Similarly, if you do for weight percentage of oxygen, we have to find the percentage of oxygen, and we have to show that it is satisfying the law of definite proportion. Percentage of oxygen is equal to weight of oxygen divided by weight of copper oxide into 100. Okay, students. So what is the weight of oxygen? We have find this 0.54 divided by weight of carbon oxide into 100. It gives you 20%. Now add this 80 plus 20 is equal to 100%. Equal. Answer you have got is we satisfy the 100%. This two adding gives you 100%, which is equal to 100%. It means that it satisfies the definite law of definite proportion. Let us do the second problem in this section. So second problems will be like in the your board. So second problem. Copper sulfate crystals contains 25.45% of copper and 36.07% of H2O. If the law of constant composition is true, okay, law of constant composition or law of definite proportion is true, calculate the weight of copper required to obtain 40 grams of crystalline copper sulfate. Okay, students. So in this problem, what they have asking you, just calculate how in 40% of copper oxide, copper sulfate, in 40% of copper sulfate, what is the weight of copper? You have to calculate this in this problem. So they have given many things for your benefit. Like they have given you the copper sulfate. They have given you. First, we write the chemical formula of copper sulfate. The chemical formula of copper sulfate is what will be the chemical formula of copper sulfate? CuSO4 0.5 times of H2O. So in this they have given you this quantity copper and this quantity. Okay, yeah. Now we will write that according to data. In data what they have given? In data they have given percentage of copper, right? What is the percentage of copper they have given? 24.45%.
Similarly, they have given percentage of water. They have given percentage of water. What is the percentage of water they have given? 36.07%. Now we have to find the percentage of sulfate to satisfy this condition. Okay. If you want to find percentage of sulfate, first listen this. The total percentage must be equal to 100. Like your mass, this total percentage must be equal to 100. Suppose imagine this is your total mass, total subjects, and this is your, आप एक क्लास में है, आपकी क्लास में कितने सब्जेक्ट्स हैं? आपको कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, इतने सब्जेक्ट हैं. ये आपको कन्नड़ा में मार्क्स आए हुए हैं, ये आपको इंग्लिश में मार्क्स आए हुए हैं. आप अगर हिंदी में कितने मार्क्स आए तो आपका परसेंटेज 100 के बराबर होगा. वो हम इसमें फाइंड करेंगे. इसमें क्या फाइंड करेंगे? इस सल्फेट का कितना परसेंटेज डाले तो 100% के बराबर होगा. तो हम इस तरह इसे फाइंड करेंगे. परसेंटेज ऑफ सल्फेट इज इक्वल टू 100 माइनस 24.5 प्लस 36.07. We get the answer is 38.48%. This is a percent of sulfate. Okay, yeah, very easy. Now we have to calculate our main. Now let's come to our main substance, main problem. What is they have given? They have given you 100% of, let's write 100 grams of CuSO4 crystals contains copper of 24.54%. Now we have to find, this is in the formula, this is in the question, just read the question. Now we have to find 40% of CuSO4 crystals contains copper is equal to question. They have given 100% of copper, 100% of copper sulfate contains this much of copper. Then how much amount of 40 grams of copper sulfate contains copper? Simple यार. अगर आपको 100 grams of CuSO4 में कॉपर इतना हो तो 40 grams of CuSO4 में कॉपर कितना होगा? इस चीज को आपको वेरी इजीली सॉल्व करेंगे. किस तरह? जस्ट देखिए, आप इसे किस तरह लिख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप 24.54, ये क्या है? इसमें कितना है, मेन में कितना है वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स. 100 ग्राम्स हम फाइंड कर रहे हैं इसलिए आप 100 ग्राम्स लिखेंगे इनटू कितने ग्राम्स में? 40 ग्राम्स में. तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर कुछ इस तरह आएगा 10.18 grams. Okay students, 40% of CuSO4 crystal contains copper of 10.18 grams. So इस चीज को आप इसी तरह भी समझिए. अगर 100% of CuSO4 में इतना कॉपर है तो 40% of CuSO4 में इतना कॉपर होगा. फॉर एग्जाम्पल ये कितना है? ये 100% का है. ये कितना है? ये 40% का है. देखिए 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 100. सो 100 ग्राम्स में कितना है आपका? 24.5%. अब आपका 40 ग्राम्स में कितना है? 10.1. एंड 40 ग्राम्स 10.1. एंड आपका 20 ग्राम्स में कितना आएगा? सिमिलरली 5.82. इतना कुछ आएगा. आपको ये 20% ऑफ कॉपर होगा अगर दी जाए तो. देखिए इस तरह आप लिख सकते हैं. इस तरह इस चीज में 40%, इस फॉर्मूले में, इस क्वांटिटी में 40% कितना होगा? अबे यार 100 में 40% कितना होगा? 40 होगा. 200 में 40% कितना होगा? 200 में 40% कितना होगा? 80 होगा. इसी तरह इस क्वांटिटी में, इस क्वांटिटी का 40% हम किस तरह लिख सकते हैं? इस तरह. इतना आंसर आ जाएगा. तो वेरी इजीली आप इस प्रॉब्लम्स को, इस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं एंड आपको मिलेंगे हम अगली क्लास में. अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड आपके दोस्तों को भी इस जानकारी को पहुंचाएंगे. एंड पता है हमें बहुत हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको वेरी इजीली समझ आए, ऐसा करें. हम ट्राई कर रहा हूं यार, समझो आप भी. तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए आप इसे देखते रहिए, सीखते रहिए एंड सिखाते रहिए. वेरी थैंक यू एंड सैल्यूट.